So, dear students, we are going to start Bholi chapter. So, you may see this one is very interesting chapter. Character Bholi is very popular in this story. चलिए देखते हैं क्या होता है स्टोरी में. From her very childhood, Bholi was neglected at home. And why did her teacher take a special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectation? It means क्या भोली टीचर के एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरती है? लेट्स सी. या हर नेम वाज सुलेखा. ओके, बट सिंस हर चाइल्डहुड everyone had been calling her भोली. ओके, द सिंपल्टन. सिंपल्टन इन हिंदी बुद्धू. एक्चुअल में भोली का भी मतलब बुद्धू ही होता है. सो उसका नाम तो सुलेखा होता है, बट एवरीवन called her Bholi. It means simpleton, that is Buddhu. Let's see. She was the fourth daughter of Nambardar Ramlal. Yes, he is very famous character of this story. When she was 10 months old, she had fallen off the cot on her head, and perhaps it had damaged some part of her brain. That was why she remained a backward child and come to be known as Bholi the simpleton. So this one is the main reason why we call her Bholi. You may see in this paragraph she just fell from the cot and she got some harm in her head. That is why her growth is not normal as like the normal student. At birth, the child was very fair and pretty, but when she was 2 years old, she had an attack of smallpox. So only one problem is not there. Problem to problem is coming. So after that, smallpox, that is called चेचक in Hindi, one disease है. तो उसके में होता क्या है, आपने देखा होगा कि स्किन की प्रॉब्लम आती है. So this one is also problem. Only the eyes were saved, but the entire body was permanently disfigured by deep black pock marks. So have you seen, जब भी चेचक होता है तो उसमें दाने निकलते हैं और बॉडी पे स्पॉट बन जाता है. सो दिस वन इज़ ऑल्सो वेरी मिजरेबल कंडीशन ऑफ भोली कि उसका पूरा का पूरा बॉडी अपीयरेंस चेंज हो जाता है, अट्रैक्टिव नहीं दिखती है. So little Sulekha could not speak till she was 5, and when at last she learned to speak, she stammered. The other children of her made fun of her and mimicked her. As a result, she talked very little. She talked very little. It means उसका माइंड का जो ग्रोथ होता है वो भी धीरे धीरे बढ़ता है, क्योंकि माइंड में भी चोट लगी होती है. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें देख सकते हो कि उसका कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो रहा है. एंड दैट इज़ वाई, एंड वन मोर प्रॉब्लम ऑल्सो देयर, हेजिटेटिंग क्वालिटी, स्टैमरिंग क्वालिटी. दैट इज़ वाई द अदर बॉयज एंड गर्ल्स, इट मीन्स चिल्ड्रन, यूज टू लाफ एट हर. तो उससे भी डिप्रेशन बढ़ता होगा. लेट्स सी इन द नेक्स्ट पैराग्राफ. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन, 3 sons and 4 daughters. इसमें से वो एक थी. एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली. तो ये याद रखिएगा आप स्टूडेंट्स, 3 sons and 4 daughters रामलाल के थे, जिसमें से ये सबसे यंगेस्ट थी. देन इट मीन्स वॉज भोली. इट वॉज अ प्रॉस्परस फार्मर household and there was plenty to eat and drink. All the children except Bholi were healthy and strong. The sons had been sent to the city to study in school and later in college. Of the daughters, Radha, the eldest, had already been married. The second daughter, Mangala, marriage has also been settled. And when that was done, Ramlal would think of the third, that is Champa. You may also remind all name students. They were good looking, healthy girls, and it was not difficult to find bridegroom for them. So Champa
and Mangala, and one more daughter is there, Radha. इन सभी की शादियां हो चुकी हैं. They got their marriage life. They are living their marriage life very happily. Here you may see that the third Champa, okay, and they were good looking healthy girls. तो इनकी ये जो बेटियां थी गुड लुकिंग थी, हेल्दी थी, इसलिए सेटल भी हो गई. एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम. एंड ऑथर इज सेइंग दैट कि उनके लिए ब्राइड ग्रूम खोजने में या ढूंढने में, उनके लिए दूल्हा खोजने के लिए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ. दे गॉट वेरी इजली. बट इट इज़ टोटली डिफरेंट फॉर भोली. भोली का ऐसा कैरेक्टर भी नहीं है, आप देखिए. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली. शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, बिकॉज उसके पास दोनों नहीं है, ना गुड लुकिंग है ना इंटेलिजेंस. तो अब ये कैसे होगा उसके साथ? लेट्स सी. सो वी मे सी द पिक्चर्स ऑफ दिस टेक्स्ट बुक. वेरी गुड पिक्चर्स. Yes, now. So Boli was 7 years old when Mangala was married. The same year, a primary school for girls was opened in their village. The Tehsildar Sahib came to perform its opening ceremony. He said to Ramlal, as a revenue official, you are the representative of the government in the village, and so you must set an example to the villagers. You must send your daughter to school. Yeah. So this one is the starting point when Bholi came into the existence. आप ये भी देख सकते हो, तहसीलदार गांव आते हैं, ठीक है, एक प्रोग्राम में, ओपनिंग सेरेमनी में. एंड वहाँ का जो मेन लीड कर रहा है वो रामलाल कर रहा है. एंड रामलाल को इंसिस्ट किया जाता है कि वो इस चीज़ को और प्रमोट करने के लिए अपनी बेटी को भी स्कूल भेजे. नाउ सी दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, हु विल मैरी देम? बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार. इट मीन्स वाइफ की भी सुनना है, तहसीलदार की भी बात माननी है. सो ही वॉज इन कंट्रोवर्सी. देखते हैं क्या होता है. ही वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड. एट लास्ट हिज वाइफ सेड, आई विल टेल यू व्हाट टू डू. सेंड भोली टू स्कूल, एज इट इज़ देर इज़ अ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड विथ हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस. लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट इट. देखो यहाँ पे भी माइनस पॉइंट ही भोली के लिए आ रही है ना. मदर डोंट वांट टू send another daughter, another girls except Bholi, because Bholi is useless there at the home. तो बोलती है कि भाई इसको अगर स्कूल भेजते हैं, थोड़ा पढ़ लिख लेगी तो मे भी इसके लिए अच्छी शादी हम अरेंज कर सकेंगे. लेट्स सी व्हाट विल बी नेक्स्ट. So the next day Ramlal caught Bholi by the hand and said, come with me, I will take you to school. Bholi was frightened, and when she heard that she was going to school, she was frightened. डर लगने लगता है, बेचारी डर जाती है. Then she did not, okay, know what a school was like. She remembered how a few days ago their old cow, that is Lakshmi, had been turned out of the house and sold. No, 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 no. She shouted in terror and pulled her hand away from her father's grip. What's matter with you, you fool? Shouted Ramlal. I am only you to school, taking you to school. Then he told his wife, let her wear some decent clothes today, or else what will the teachers and the other schoolgirls think of us when they see her? This one is the very important paragraph. It means mother also wants that she will go to the school, but now she didn't wear any decent dress. That is why उसको insist करती है कि ठीक ठाक कपड़े पहना करके उसको वहाँ से ले जाओ. New clothes had never been made for Boli. The old dresses of her sister were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, but today she was lucky to receive a clean dress which had shrunk after many washings, and no
लॉन्गर फिटेड चंपा। इट मीन्स चंपा का ही पुराना एक ड्रेस होता है उसी के सिस्टर की, जो काफ़ी टाइम से धो करके साफ करके रखा गया होता है ना, अभी उसको वो चीज़ पहनने को मिल रहा है। शी वॉज इवन बाथ एंड ऑयल वॉज रब्ड इन टू हर ड्राई एंड मैटेड हेयर। मैटेड दैट इज़ उलझा हुआ, ठीक है, बाल एक दूसरे से उलझ जाते हैं, तो इसके बालों में कॉम्ब नहीं की जाती थी, केयरलेस होते थे सभी लोग, दैट इज़ वाई द कंडीशन वॉज देयर। बट अभी इसका क्या हो रहा है, गुड लुक में करने के लिए उसको नहलाया जा रहा है, धुलाया जा रहा है। देन शी वॉज गेटिंग बाथ एंड कॉम्बिंग देयर, ओनली देन डिड she began to believe that she was being taken to a place better than her home. It means after doing that all things, she was thinking that कि चलो जहाँ भी जा रहे हैं, जिसके लिए भी हो रहा है, इसका मतलब लग रहा है बढ़िया जगह है। स्कूल, व्हाट इज स्कूल, उसको भी कुछ पता भी नहीं है। सी, when they reached the school, the children were already in their classrooms. Ramlal handed over his daughter to the headmistress. Left alone, the poor girl looked about her with fear-laden eyes. बेचारी डरी डरी आंखों से देख रही है, हेड मिस्ट्रेस ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। There were several rooms, as like in the schools you may see, and in each room girls like her squatted on mats. It means जनरली उस टाइम पे मैट्स होता था, नीचे बैठ के पढ़ाई करते थे। आज भी हमारे वहाँ गवर्नमेंट स्कूल में आप देख सकते हो। एंड रीडिंग फ्रॉम बुक्स आर राइटिंग ऑन शीट स्लैट्स, जो पहले स्लैट्स होते थे उस पर लिख रहे हैं बच्चे। द हेड मिस्ट्रेस आस्क्ड भोली टू सिट डाउन इन द कॉर्नर इन वन ऑफ द क्लासरूम। तो वहाँ एक क्लास में ले जाती है एंड जनरली उसको एडवाइस करती है कि तुम एक जगह बैठ जाओ, ठीक है। तो भोली का भी सफ़र शुरू हो चुका है। लेट्स सी शी विल बी कंटिन्यू इन स्कूल और नॉट, या मे बी कंटिन्यू करने के बाद उसके अंदर क्या चेंजेज आते हैं। लेट्स सी in the next paragraph.